So here we are studying ionic compounds. Ionic bonds and ionic compounds. So the ions that are shared during these compounds उसको हम बोलते हैं ionic compound. ठीक है, and the bonding that is made between the metal and non-metal under this, that is called as ionic bond. Ionic bond has speciality as it includes gain or loss of the ions. Gain is done obviously to the negative ion क्योंकि negative ion has tendency to gain but not to lose, and loss of ions is done with that element which is positive and has tendency to lose. ठीक है, and mostly it happens between metals and non-metals. Non-metals here does not mean only solid non-metals, but it can be powdered non-metals as well. For example यहाँ पे हमने लिया क्लोरीन लिक्विड है, कई बार कैल्शियम भी आ जाता है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होता है. सो दिस इज हाउ इट गोस. ठीक है, हाउ टू शो द आयनिक बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ डॉट एंड शेयरिंग, वो यहाँ है. दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर फॉर आयनिक बॉन्ड, right? How we have shown oxygen, sodium, oxygen. If you have to show, you can show double bonding, 4 over here and 1 2 3 4 over here. Again another, this will go 1 2 and 1 2, compound complete. 1 2 3 4 5 6 7 8, and same it is sharing with others. So this sharing of ions among metals and non-metals, or positive ions and negative ions, that is called as ionic bond or ionic compound. The matlab basically ionic bond, and by this bond whichever mixture is formed, that is called as ionic compound. Ionic compounds have high melting point. Iska kya reason hai? This can be asked in the form of questions, and it has been asked many a times that why ionic compounds or bonds, they have high melting and boiling point. So the reason behind that is कि ionic compound have high melting point because of the strong electroelastic forces. फिर इसकी properties आ जाती है. Properties का explanation is important. Hard and bitter because of high फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो हार्ड क्यों होते हैं आयनिक कंपाउंड्स? उसका रीजन है कि उनमें जो फोर्सेस होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर इलेक्ट्रोलास्टिक. ठीक है, तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? अगेन बिकॉज टेम्परेचर है, अगेन बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस है, तो इसलिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इजीली जो है सोल्यूशन के थ्रू ये कंडक्शन कर सकते हैं. और लास्ट प्रॉपर्टी बट नॉट द लीस्ट, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. रीजन क्या है? वाटर हैज नो फ्री मूविंग आयंस. The reason is water does not have free moving ions, but organic compounds, they have ions to conduct. So these all are the properties of ionic compounds, and that's it. और इन बॉन्ड से जो compounds बनते हैं उनको हम बोलते हैं ionic compound.